हम सोचते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं ये मेरी बात सुनता क्यों नहीं है, और हम इसमें ना उलझते रहते हैं। Yeah, because we forget that we have triggers. We have things from, they could be within our marriage, they could be within, our childhood. For example, अगर बच्चा नहीं सुन रहा, it's the underlying emotion there is they feel unheard. बट एज अ साउथ एशियन पेरेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये लगता है ये बैक होम से आए हैं, इनको आज की चीज़ों का नहीं पता। And it is the world of social media. आई एम डूइंग व्हाट माई मम और डैड यूज्ड टू डू इट, Yeah, एंड दैट वाज रॉन्ग। yeah. If your child doesn't behave like that in normal routine, there's obviously something there. अच्छा, पेरेंट्स को अपने बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए फॉर देयर बिहेवियर। 100%. I think it is one of the most important things we can do as a parent, अच्छा, हम किसी पे गुस्सा क्यों करते हैं? because it depends on each individual. Majority of the time what I've seen is it's our reaction. अगर कोई पेरेंट आके कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, मैंने उसको मारा, उसको ब्रूजेस हो गए हैं, अब वो मेरे से बात करते हुए भी डरता है, मैं क्या करूं? This becomes a very tricky area because obviously there's safeguarding issues here. Now, the first thing, I wouldn't just jump and go call safeguarding. I would have to explore when this was, how often it is, and how much of this abuse is going on. एक जुमला जो पेरेंट्स को गुस्से में अपने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, नो, वो वर्ड कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। Anything with hate or degrading the child, anything related to that. एक वर्ड जो पेरेंट्स को एवरीडे कहना चाहिए, We love you. You're important. एक चीज़ पेरेंट्स के लिए जब उनको गुस्सा आया हो तो वो उसको कम कर सकती है। You need to just stop yourself. I think you need to pause. And it's very hard. You have to pause and think why. And there's a Start counting. there's a technique. You have a rubber band on your hand. Take it off and put it on the other hand. It diverts your mind. अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। क्या आपके दिल में कभी ख्याल आता है कि जब हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं तो उसके बाद हम खुद ही परेशान होते हैं? क्या आपको लगता है कि मैंने ये गुस्सा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश इस घर में सुकून हो, मैं इतना गुस्सा ना करूं? या हम समटाइम ये भी सोचते हैं कि इस बच्चे ने मुझे गुस्सा दिलाया, इसकी वजह से मैं हाइपर हुई हूँ या हुआ हूँ। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने आज बुलाया है एक साइकोथेरेपिस्ट को जो कि फाउंडर है नोरा की। मेरे साथ हैं आज ज़ैनब चौधरी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये क्वेश्चंस हर पेरेंट्स के माइंड में आते हैं जी। और हम फिर बाद में पछताते भी हैं, हाँ जी। और ऑल द टाइम यही सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, या मैं ठीक हूँ बच्चे गलत हैं। और एज अ एडल्ट हमें लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक 99% हमें यही लगता है कि आई एम द राइट वन। Yes. ऐसा क्यों होता है? Because we don't understand the emotions. क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, it's not the first emotion, it's a secondary emotion. A lot of parents come for counseling and they're like, इसने हमारी बात नहीं सुनी या इसने ये किया और हमें गुस्सा आ गया. But they don't understand what's the underlying issue for them. Yeah. Okay, what's their triggers on why they were so angry all of a sudden. Sometimes they feel hurt, they feel unheard, they feel like they have no value, they're losing control. That's a very big thing in parents. कि जो हमारा control है वो बच्चों से जा रहा है. So that then results in anger. And a lot of parents don't understand कि गुस्सा तो कर लेंगे, बाद में they're like, हमने शायद हमारी गलती नहीं है, इसने हमारी बात नहीं सुनी. पर वो क्यों नहीं सुन रहा, हम ये नहीं सोचते. हम सोचते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं ये मेरी बात सुनता क्यों नहीं है, और हम इसमें ना उलझते रहते हैं कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, और हम हमेशा बच्चे की गलती निकालते हैं. हम कभी भी अपने पे, क्योंकि हमें लगता है आई एम ग्रोन अप, आई एम एडल्ट, आई नो एवरीथिंग, बिकॉज आई एम अ पेरेंट,
आई एम अ मोर रिस्पॉन्सिबल, आई नो एवरीथिंग। Yeah. तो ऐसा क्यों होता है? Because we forget that we have triggers. We have things from, they could be within our marriage, they could be within, you know, our childhood. For example, अगर बच्चा नहीं सुन रहा, it's the underlying emotion there is they feel unheard. अगर बचपन में किसी ने आपकी नहीं सुनी, तो बड़े होके, like when you're adults and you're the adult and you're the parent, और बच्चा नहीं सुन रहा, तो you're like, wait, hold on. The anger is safeguarding the actual emotion, the vulnerability, because you don't want to feel vulnerable and you don't want to showcase that vulnerability, especially to your children. So we don't pause and think, "Ke ye kyun nahi sun raha? Ya, why am I getting so triggered? मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, या गुस्सा कर रही हूँ, या गुस्सा कर रहा हूँ?" Because we think we're the adult and we're fine, but we don't delve into our actual emotions. हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? There are many things on that. I don't think it's, as a therapist, I would explore why you want to control that. You know, what is the need? Generally, what I found is when you don't have control growing up of your life and decisions, which most of us don't, because we've always got an adult telling us, especially in our community, Yes. बड़ों की सुननी है, बड़े ने जो कह दिया, बेशक वही है, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। Exactly. हाँ क्योंकि हमारे पास वो कंट्रोल नहीं होता. हाँ So inevitably, what we're building in our children is that आप जब बड़े हो जाओगे ना, you have that control. So we're not breaking the cycle. We need to break the cycle with our own parenting, that it's okay for them to have a viewpoint. It's okay for them to have an opinion. We have to understand that as well. But because we've never had that control throughout our lives, we don't want to let go of that control because it is something nice to have. शायद अगर हम बच्चों को ये अथॉरिटी दें, you make your decision, this is right and this is wrong, you make your own decision. So उनके पास एक अथॉरिटी आती है. Yes. बट हम ऑल द टाइम अपने माइंड में हमने शुरू से ही ये सोच लिया होता है, ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, आई एम द एडल्ट, आई एम द पेरेंट, आई नो एवरीथिंग. Yeah, and parents aren't wrong in that. We aren't wrong because we have experiences. And from those experiences, we've dealt with consequences as well. Yeah. If as a parent, you were to say, you know, you have this choice, this is right and wrong, but you're allowed to take that. Yeah. But then we have to be brave enough to allow them to deal with those consequences as well. As parents, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, you know, deal with the bad consequences. बिल्कुल. बट एज अ साउथ एशियन पेरेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये लगता है कि ये बैक होम से आए हैं या बैक होम से नहीं भी आए, इनका ज़माना पुराना था, Yes. इनको आज की चीज़ों का नहीं पता और हमें सब कुछ पता है. Yes. And it is the world of social media, in all honesty. I have children and they seem to think that I don't know what's going on in, you know, their world. But we do. I think now parents, they're getting more involved, but kids don't see it as that, you know. अगर हम हमारे ज़माने पे चले जाए कि हमारे parents जब आए थे या हमारे how they raised us, their time was very, very different to ours. We're a lot more open to learning how things are. But if we talk about teenagers, they're gaining their confidence, so they try and push boundaries. They will push boundaries until they know where the limit is. But South Asian parents, we tend to cut off the boundary quite soon, which then has a negative effect on the teenagers who want to then test them again. And that's where the clash comes from. कि हमारे टाइम पे मेंटल हेल्थ वाली कोई चीज़ नहीं होती, नहीं थी, ना पेरेंट्स में थी ना बच्चों में थी. No. यानी बच्चों पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और बच्चों को तो इजाज़त ही नहीं थी कि ये सोचे कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है. Yeah. या हम अपनी अम्मा को जाके ये कह सके कि आज मैं लो फील कर रही हूँ. भाई तुम पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुमने खाना पीना पढ़ना, दैट्स इट. Exactly. तुम कैसे लो हो सकती हो? तुम्हारी तो लाइफ परफेक्ट चल रही है. परफेक्ट सब कुछ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुमने कौन सा खाना पकाना है.
Yeah. तो ऐसे ही बस ये क्या है, कहाँ से सुन के आई हो, Exactly. ये बताओ जरा पहले मेंटल हेल्थ के बारे में सुन के कहाँ से आई हो। अच्छा, जो बच्चे उनके घर का माहौल ऐसा हो कि उनके इर्द गिर्द हर वक्त चीखो पुकार होती रहे, यानी पेरेंट्स लड़ रहे हैं आपस में, या अब वो किसी बात से नाराज़ हैं, किसी भी बाहर कुछ हुआ है, कुछ काम पे कुछ हुआ है, और वो आके उनका मूड ऑफ है और वो फजूल में गुस्सा कर रहे हैं, या अम्मी किसी चीज़ से परेशान है, उनको कोई ससुराल में प्रॉब्लम हुआ है या बहन भाइयों के साथ कोई मसला हुआ है, लेकिन उनका मूड ऑफ है या वो गुस्सा कर रही है, चीखो पुकार कर रही है। बच्चे जब इस तरह के माहौल में बड़े होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी पे क्या असर होता है? It's a very negative effect, obviously. They won't know how to regulate their emotions because they won't have the opportunity to. उनको इजाज़त नहीं होती कि हम अपने emotion को feel कर सकें. So they're in constant fight or flight mode, which is a response that your body gives when you're in danger. And they won't explain, and it has a negative effect on when they become adults and they become parents and they are living in their lives. They will mirror the behavior they saw in their own house, in their own lives when they're older. It can become very exhausting. And I have a lot of clients who come in who will say, you know, this is what it was like in our family. There was never any peace. There was always abuse going on, whether verbal abuse or physical. And they don't know how to control their emotions or their anger now because they hate that moment, that time. Yeah. And they always say कि we're not gonna be like that. Yeah. We're not gonna be these kind of parents or these kind of person. Yeah. हम ऐसे नहीं होंगे. Yeah. All the time वो यही कहते हैं, या ये कहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ ये सब नहीं करूँगी, Yeah. या करूँगा. और जब वो खुद बनते हैं तो वो खुद सब कुछ कर रहे होते हैं, और sometimes they realize as well, oh my God, I am doing what my mom or dad used to do it. Yeah. And that was wrong. Yeah. If your child doesn't behave like that in normal routine, there's obviously something there. Something's happening in school, something's happening within their friend group. And as parents, we know our children. तो जब स्कूल से कॉल आती है ना कि आपका बच्चा बदतमीजी कर रहा है, and you know कि वो नॉर्मल रूटीन में नहीं करता, you know there's something bothering them. Yeah. पर वही आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हमारे पास कि हम बच्चे के साथ बैठ के पूछें. And the children don't know how to name their emotions. Yes. So they struggle and they will say, we don't know. हमें नहीं पता. हमें बस गुस्सा आया है. But क्यों गुस्सा आया है? As parents, we need to get to the bottom of it. And sometimes it is as small as एक दोस्त के साथ लड़ाई हो गई. But for the child, it is a big thing. Yeah. And we have to appreciate that. We have to acknowledge it and be compassionate towards the child and say, okay, if this is a big thing for you, then I understand. हम कहते थे इतनी सी बात है बस छोड़ दो, कोई मसला नहीं. So we need to be able to sit with our children and actually speak to them and ask them, what's going on? What's bothering you? And some of the tools that we use as therapists at Nora is, you know, naming the feeling in your body. So a lot of people can't name their emotions. So we ask them to describe what they're actually feeling within their body, whether it's they feel, you know, a tingly feeling, whether they feel like their heart's going to burst, anything like that. It helps us understand what they're actually feeling. And it is more normally anxiety, you know, fearful, overwhelmness. There's so many different emotions that that child could be feeling at that moment. But a lot of these kids, they won't know the names of them. So how are they meant to tell you as a parent, you know, this is how I'm feeling? हमें लगता है कि नहीं चलो बस ठीक है बच्चा क्या है? पढ़ना नहीं है इसलिए, you know, they might have difficulties in a class. Yeah. कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा होगा, but they're scared to tell you कि हमें ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा. कौन से स्टेज पे मुझे ये पता लगे कि मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है? क्योंकि दिस इज़ बिग थिंग. Yes. लाइक सबसे पहले तो मेरी एक अना जो है वो होगी कि मैं पागल हूँ, Yeah. मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है थेरेपिस्ट के पास जाने की, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? Yeah. सो जब नज़र आ रहा हो दूसरों को कि आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको खुद को कैसे पता लगे? अगर देयर इज़ नो वन अराउंड यू टू टेल यू दैट यू नीड अ थेरेपिस्ट, हाउ डू आई नो दैट आई नीड वन? When it comes to therapy, there's a lot of taboo around it.
like you said, you would think मैं पागल हूँ. Therapy isn't for pagal people. It's creating a safe space for you to speak. No judgment there. When someone comes in for counselling with me, I don't know them. I don't know their story. It's what they tell me. My place isn't to judge you. My place is to help you understand your feelings. Create a space for you where you feel so safe that you can express how you feel. You can cry. You can laugh. You can get angry in that session. That space is yours. When to find out whether you need therapy or not, it can be very tricky, especially in our culture. Because हम तो ओपन अप होते ही नहीं है ना. नहीं, लाइक मुझे लगेगा ओह इसको पता चल जाएगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा. वो इस बंदी का कोई कनेक्शन मेरी फैमिली से निकल आया तो मेरी बात लीक हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी. या मैं एक बंदी के सामने या किसी थेरेपिस्ट के सामने जाके बैठूंगा या बैठूंगी, so that means I am weak. there's something wrong with you. Yeah, but there isn't. I think the strongest people are those who are able to understand that they are struggling and they need help. Therapy is fully confidential. अगर आपके कोई जानने वाले निकल भी आते हैं, as a therapist, I would never be able to disclose that I know you as a client. I always ask my clients whether they want me to say hello if we meet outside, क्योंकि local के होते हैं आप. And majority say, yeah, they're happy for you to say hello. You know, you won't stand there and have a conversation. It will be a friendly nod or a hello, and that's it. But there is that fear because mental health and therapy is related to pagalpan. You have pagal ho gaye ho, isliye aap ja rahe ho therapy. But it's not the case. If everyone, I believe, needs a safe space where they can talk without judgment, where they're able to learn how to regulate their emotions. Okay. और अगर मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी एक एग्जांपल करते हैं. मैं आपके पास आती हूँ, मैं कहती हूँ कि ज़ैनब हेल्प मी, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई चिल्ड्रन, आई डोंट नो एवरीथिंग इज़ मेरे हाथों से निकल रही है. मुझे मैं बच्चों पे चीखती रहती हूँ हर वक्त, और मैं उनको हर वक्त डिसिप्लिन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं होता है. वो मेरी बात सुनते ही नहीं है. मैं जो भी कहती हूँ उसका जवाब होता है नो. सो मुझे अपने पे शक होना शुरू हो जाता है कि मैं ही गलत हूँ क्या, या मेरे ही डिसीजंस गलत है, या आई एम नॉट द, एक्चुअली हम लोगों में परफेक्ट वर्ड बहुत ज़्यादा होता है ना, कि आई एम नॉट द परफेक्ट मम. मैं क्या करूँ ज़ैनब, मुझे आप बताएं. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस? So as a therapist, I don't advise. So that's not our job. As therapists, we do not advise. We would explore what perfect means for you, because everyone's definition is different. Everyone's thought process is very different. My definition of perfect will be very different to yours. So I would explore what a perfect mother means to her. I would explore why what is the need for her to feel that she has to discipline, and what she means by disciplining her children. You know, we would explore all these different aspects, but it wouldn't be done in one session. So the way, you know, we work at Nora, we're person-centered. So anything that the client brings in that session is what will be discussed. So there are times when clients will come in with 10 different issues, and it will be client shuru hota hai, and they're just like talking. Itne issues aa jate hain, and we have to stop them and ground them and bring them back into the session, into the room with us, and say, what is important for you right now? And they will know. जो एक topic उनको बहुत bug कर रहा है ना, like which is really bothering them, they will bring that in, and we will work on it one by one. That one situation might take 5 sessions, might take 1 session, might take 20 sessions. We work at the pace of the client. Once we've established a very good working relationship with the client, we then bring in integrative theories, which is CBT and psychodynamic. There are different tasks in that, so they're given tools to work on, but that comes quite later on, because a lot of people, when they come to therapy, they just need someone to listen to them. अच्छा, पेरेंट्स को अपने बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए फॉर देयर बिहेवियर, फॉर देयर, अगर वो रूड हो जाते हैं या कभी हाथ उठा लेते हैं क्योंकि गुस्से में, और फिर हमारा यही होता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया.
तो मैं तुम्हें मारा, तुम मुझे गुस्सा ना दिलाते तो मैं तुम्हें ना मारते। Yeah. मतलब ये हम ये भी उन्हीं पे डालते हैं Yeah. कि ये भी तुम्हारी गलती है, मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारी गलती Yeah. है। तो हमें अपने बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 100%. I think it is one of the most important things we can do as a parent. Admitting your mistake to your child is showing them that it's okay to make a mistake and it's okay to rectify that mistake. क्योंकि आप उस गलती को फिर rectify कर रहे हैं by apologizing. But then that also has to come with change behavior. Yes. अगर आप एक दिन माफ़ी मांगे और कल फिर चिपड़े वो फिर माफी का फायदा नहीं है ना, फायदा नहीं। you know, you just don't apologize. There has to be change in behavior. What we need to understand as parents is हमेशा बच्चे की गलती नहीं होती. It's what we're dealing with. So Yes. what we need to ask ourselves is, what was going on for me at that moment? इससे आधा घंटा पहले क्या हुआ था? इससे घंटा पहले क्या हुआ था? You know, what conversation did I have with who? क्योंकि generally what happens is किसी ने हमें कोई बात बताई होगी जिससे हमें बहुत गुस्सा आया होगा, वो बच्चे पे निकलती है क्योंकि बच्चे ने नो उस वक्त कह दिया. अच्छा, हम किसी पे गुस्सा क्यों करते हैं? Because it depends on each individual. Majority of the time what I've seen is it's our reaction, because it's undermining, sometimes it undermines your value of what you think. Everyone has their own opinion, everyone has their own thought process. Agar kal ko say my sister said she's made a decision and I don't agree with it, and I've suggested to her कि आप ये ना करो, लेकिन वो वही करेगी, ठीक है, आपको तो गुस्सा आएगा, क्यों? क्योंकि you know that's the wrong thing. Yeah, ऐसा नहीं होता है कि you know this person, I have a authority on this person, और हम इसलिए गुस्सा करते हैं. Like जैसे बच्चों पे हमारी अथॉरिटी है, ठीक है, मुझे कोई बात बुरी लगेगी मैं फ़ौरन उस पर गुस्सा करूँगी. बट इफ़ आई एम एट वर्क प्लेस, आई नो आई डोंट हैव अथॉरिटी ऑन दिस पर्सन, ये मेरा बॉस है, मेरी इस पर अथॉरिटी नहीं है, मुझे जितना मर्जी गुस्सा आया होगा मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकती. But then you're carrying that and you're taking हाँ, it home. बिकॉज मुझे पता है कि घर में मेरी अथॉरिटी है. तो गुस्सा वहीं आप निकालते हो जहाँ आपको लगता है कि आपकी अथॉरिटी है. Yeah. अगर कोई पेरेंट आके कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, Okay. लाइक नुकसान पहुंचाने का मतलब ये कि मैंने उसको मारा है, मैंने उसको मारा, उसको ब्रूजेस हो गए हैं, अब वो मेरे से बात करते हुए भी डरता है, मैं क्या करूं? This becomes a very tricky area, because obviously there's safeguarding issues here. Now, the first thing, I wouldn't just jump and go call safeguarding. I would have to explore when this was, how often it is, and how much of this abuse is going on. So there's a lot of exploring that needs to be done. And when we are in a counselling room, we're very transparent with our clients. So if we are going to break confidentiality, we do inform them that I do have to report this. If I feel like it's not been done in a while and it was done before, but, you know, the parents made a change in their behaviour, then it would be working towards rebuilding that relationship with the child, which can take months and years. And some parents think it won't undo the damage, and it doesn't, but it makes your relationship in the future better, because children will then see that, you know, you have changed, that you have approached them, you have spoken to them, you are trying to rebuild that relationship. But again, it's a slow process, which a lot of people aren't ready for. जब कोई थेरेपी के लिए आता है एंड वो उस वक्त अपने बहुत वीकेस्ट मोमेंट में होते हैं, बट दे वांट अ सिंपैथी, दे वांट एक्नॉलेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैंने जो किया मैंने सही किया है, और वो झूठ बोलते हैं. आपको पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा बंदा? Generally, yes, but it depends how long I've been seeing the client. Whether they're lying to me or not, depending on what the lie is. Obviously, if I think it's a issue where they're, you know, harming someone, then I would report it. But I think it's just any other lie, then you just have to kind of explore that with them and bring them back into the room and ask why they're looking for that sympathy, and what else are they? What is it that they want? I can't simple on question them and say, why are you lying? Because I can't prove it.
क्योंकि मैं तो पूछूंगी ना, आपको कैसे पता मैं झूठ बोल रही हूँ? Exactly, you know. So we would have to explore, and you know, when someone lies, then stories don't match. या You know, वो पता चल जाएगा. yeah, story हर दफा change होती है. So you हाँ. bring them back and you say, you know, this time last session you said ये बात, और अब आप ये बात कर रहे हैं. So which one is true? which one are you going for? Yeah. You know, so that I have a better understanding. As therapists, we always repeat back what our clients say to us. We paraphrase it, we rephrase it, and it gives a chance for the client to actually hear back what they said. Because जब हम बोलते हैं, we don't always remember what we said. Yes. And when we're in a very low moment, we don't remember at all. So when we hear back what we said, there's a pause and you're like, oh, wait, मैंने ये कहा था? Yeah, did I actually say that? ये तो अब कुछ हो ही नहीं रहा. Oh, I lied. Yeah, exactly. And that's how, you know, you kind of deal with it. अच्छा, मेरे पास एक रैपिड फायर है आपके लिए, रैपिड फायर राउंड. Okay. I do with my guests. छोटे छोटे आंसर्स बिल्कुल, ताकि रैपिड हम करें. अच्छा, एक जुमला जो पेरेंट्स को गुस्से में अपने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, नो, वो वर्ड कभी यूज नहीं करना चाहिए. Anything with hate or degrading the child. Anything related to that. एक वर्ड जो पेरेंट्स को एवरीडे कहना चाहिए. We love you. You're important. You know. एक चीज पेरेंट्स के लिए जब उनको गुस्सा आया हो तो वो उसको कम कर सकती है. You need to just stop yourself. I think you need to pause. And it's very hard. You have to pause and think why. And there's a... Start counting? Yeah, there's a technique. You have a rubber band on your hand. Take it off and put it on the other hand. It diverts your mind. And it stops the anger. पेरेंट्स के बारे में एक गलत फहमी जो आप मिटाना चाहेंगी, यानी जो बच्चों के दिमाग में ऑल द टाइम होती है. Our parents don't understand. कोई भी चीज़ एक्सप्लेनेशन मांगो ना कि बेटा आप मुझे समझाओ क्या बात है, मैं आपकी बात समझूंगी. You don't understand. Yeah. घर में सुकून रखने के लिए एक एडवाइस आप क्या करना चाहेंगी? Communication. But with comprehension. So you have to try and understand what the person is thinking. You can have all the communication in the world in the house. लेकिन अगर आप अगले बंदे को समझ नहीं रहे ना, या उनके पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो there's no point in that communication. अगर घर में सुकून रखना हो तो क्या एडवाइस देंगी? That's a tough one. I think मुझे लगता है कान पे बंद कर लें, मुंह भी बंद कर लें, आंखों से जो भी नजर आया सुकून. I think it comes down to what everyone's perception of sukoon is. हर किसी का different meaning होती है. You know, you have to work with those in the house and define what sukoon is for all of you. क्योंकि आपका जो सुकून होगा वो बच्चों का सुकून से different होगा, या आपके husband के सुकून से different होगा. तो if you're trying to find your peace, आप उनका peace खराब कर रहे हो. So you have to work together and figure out what works for you as a family and work on that. बिल्कुल सही. अगर एंगर एक पर्सन होता, आप उसको क्या एडवाइस करती? I wouldn't advise. I'd ask what's the actual reason. You know, what's below the anger? Because, like I said, anger majority of the time is a second emotion. It's keeping safe the vulnerable emotion that we're trying to hide because we don't want to face that emotion. What is the process of healing? Healing is linear. So healing is not a straight line. कि आपने ये करना है. One day you will feel like, you know, you're doing so well. The other day you will have a crash. And that's normal because our body is still trying to get used to what's happened and we're trying to process it. So that could take months. It could take years. I always say to my clients, healing is never linear. You will not feel amazing for a couple of months and then just be perfect. You will have a downfall. You know, you will feel down some days, you'll feel really good some days, but you will learn to live with it. एक बंदा जिसने हमेशा गुस्सा ही किया है, हर बात में उसको गुस्सा आता है, यानी वो नॉर्मल बात भी करता है या करती है तो ऐसे लगता है कि वो गुस्से से बोल रहे हैं. बाकी सबको नज़र आता है कि इसकी हर बात में एंगर है, लेकिन उसको लगता है दिस इज़ वेरी नॉर्मल, मैं ऐसे ही बात करती हूँ या मैं ऐसे ही बात करता हूँ. उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? What we have to understand is
if they think that's normal behavior, for them it is. That's what they've learned all their lives. So asking someone to change essentially asking them to change their personality, because that's what they've grown into. It can happen. It would take months and years of therapy of them to even accept that, there is an issue there. But it's a lot of exploring of where this stems from, where it all comes from. तो बचपन के ट्रॉमास जो होते हैं उनको हील किया जा सकता है. Yes, they can be healed, but you have to be willing to do it. A lot of people refuse to go into their childhood trauma because it's too hurtful and it's too painful. They don't want to discuss it. They don't want to go there. And even if they do, once they do touch upon it, it's so painful, they'll close off. So with childhood traumas, we have to tread very carefully. So अगर कोई अपने बचपन के ट्रॉमा को ओवरकम कर लेता है, so that person can heal. Yeah. अच्छा, जब कोई आपको ये आके कहे कि ओ आप तो बहुत ओवर सेंसिटिव, आपकी जो नॉर्मल सी बात करें तो आप तो उसको बहुत ऊपर ले जाते हो, that damages self-esteem. है ना? Yeah, a lot. फिर And दिल करता है कि it's very common in our country. हाँ, बहुत बहुत कॉमन है. अगर दूसरे बंदे को एहसास दिला रहे हो कि आपने ये बात गलत की, आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो अगले बंदे का पहला रिएक्शन आता है कि तुम तो ओवर सेंसिटिव हो, मैंने तो कोई ऐसी खास बात की नहीं, मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की है जो सब करते हैं. And that's their defense mechanism. Yeah. Because they don't like to be told that they've hurt. So there's trauma from there as well. हाँ. There's trauma from both ends. One who's being told that they're oversensitive, they feel like they're unheard. And the one who's saying it, they feel like, हम तो कुछ गलत करते हैं. हम तो कर ही नहीं रहे. बस बजाय इसके कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि नहीं अगला बंदा हर्ट हुआ, आई हैव टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम. Just a little empathy. है ना? Just a little empathy this world needs. ये सारी चीज़ें घूमती हैं अना के इर्द गिर्द कि हम में ईगो बहुत ज़्यादा है. हम हर चीज़ को ईगो पे ले जाते हैं, अच्छी बात बुरी बात, ये सारी चीज़ें. आज आपसे सारी बातें करने का मकसद ये था कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि हम एडल्ट, हम इंसान हैं, ठीक है? इंसान, ह्यूमन बीइंग मेक मिस्टेक्स, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स. हम बड़े होके ये ना समझें कि आई एम द परफेक्ट, बिकॉज हर बंदे के अंदर ये है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, बाकी सब गलत हैं. और स्पेशली हम बच्चों को तो बिल्कुल ही ना समझते हैं, लेकिन हम एवरीडे बच्चों से भी सीखते हैं. Exactly. बच्चे इतनी अच्छी और समझ वाली बातें कर जाते हैं कि मैं खुद इतनी मैं कहती हूँ वाओ, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी. और इस चीज़ को एडमिट करना इज़ अ बिग थिंग कि मुझे नहीं पता था, उस बच्चे को पता है, मुझे इस बात का नहीं पता था. तो हमें लर्न करनी चाहिए चीज़ें, ना कि हम हर चीज़ को ईगो पे ले आएँ कि ये बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा तो ये मुझे सुनना नहीं चाहता, तो अब मैंने इसको आई एम गोना मेक हिम टू लिसन टू मी Yeah. rather than we gonna listen to him. What is the problem? Yeah. Why he is doing that? Yeah. So I think हर जगह हमें खुद को भी ठीक करने की ज़रूरत है. As a parents, we need to learn so many things. A lot of things. And we need to understand that anger is not a character flaw. It's a signal. It's your body's way of telling you there's something wrong but it's within you. You have to deal with it. You have to figure out what it is. तो जाते जाते हमारे देखने वालों को क्या मैसेज दे, एक पेरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगी? Please listen to your child. When you do get angry, try and understand where your anger is coming from, because that will play a huge part in your relationship with your child. और अगर एक बंदा खुद को ना समझ सके, उसको खुद को ना समझ आ रही हो कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, तो वो नोरा के पास क्यों आए? So at Nora, like I said, we create a safe space. We will explore your emotions. We will explore why you're feeling this way. We provide tools for you to work with. We're a low-cost counselling agency. And one of the reasons why I started Nora was because therapy is very expensive. A lot of people shy away from therapy because of the costs. And I realized this gap when I needed therapy a couple of years ago. So Nora specializes in, one of our niches are
that we want to provide low-cost counselling for those on low income, those are single parents, those who are, struggling in domestic daily relationships, but are unable to come out. And some people don't want to come out of them, but they need someone to talk to. So we're here to help you navigate through your life, navigate through your emotions, and help you stand on your own feet. थैंक यू सो मच ज़ैनब आपके आने का। Thank you so much. किसी और ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं जब भी इस तरह की कोई वर्कशॉप हो पेरेंटिंग से रिलेटेड, इस तरह की कोई भी टॉक हो, लिटरली आई ऑलवेज थिंक कि आई लर्न न्यू थिंग, और फिर उसको याद रखना, ये चीज़ मैंने नहीं करनी। अगर मैंने आज कुछ सीखा है या आपने आज हमारे इस सेशन से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ उसको याद ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको लगे कि आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं, इसका मतलब ये है कि यू गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ, विद योर चिल्ड्रन, विद योर पेरेंट्स। सो आप इन सब चीज़ों के लिए नोरा के पास आ सकते हैं, ज़ैनब के पास आ सकते हैं। तो आज का मकसद यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए गेस्ट के साथ दोबारा से आएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।